Let's start with today's class. Okay, so today we shall be doing t-test. So t-test is basically a very common and a very important statistical analysis tool. It's very frequently used in research. It's very frequently used to test whether the data that we've collected or the conclusions that we've drawn are they significant or not. So when we talk about t-test, there are certain criteria that we need to know. जैसे कि हमने बाकी टेस्ट के लिए भी क्राइटेरिया डिस्कस किए थे. When we talk about the टी टेस्ट, predominantly टी टेस्ट के लिए क्या होता है, हमें टी टेस्ट के लिए दो सेट्स ऑफ डेटा चाहिए होते हैं या दो सैंपल्स चाहिए होते हैं. सो यूजुअली क्या कहते हैं, कुछ टेस्ट जो हमने देखे थे उसमें हमारे पास एक ही सैंपल था, या हम क्या कहते हैं हमारे पास पेयर्ड वैल्यूज होती थी, तो हम पेयर्ड वैल्यूज के एक पेयर को a single pair consider कर रहे होते थे. So when we were previously seeing Pearson's linear correlation or we were seeing Spearman's rank correlation, वहां पर हमारे पास क्या कहते हैं, जो हम दो डिफरेंट स्पीसीज का या दो डिफरेंट वेरिएबल्स का डेटा इनपुट कर रहे होते थे. सो V1 V2 was taken as one pair. सो ऐसा नहीं था अगर मैंने 10 ऑब्जर्वेशंस V1 की ली हैं और 10 ऑब्जर्वेशंस V2 के लिए हैं तो मेरे पास वहां पर सैम्पल साइज 20 हो जाएगा. बिकॉज ओवर देयर वी वर डीलिंग विद पेयर्ड वैल्यूज, तो हमारे पास जो सैम्पल साइज था वो 10 था. इट वाज बेसिकली आवर, we were taking it as a one paired sample. When we talk about the t-test में हम basically दो different samples के data को compare कर रहे होते हैं कि हमारे पास जो ये दो different samples हैं इनमें difference जो है वो significant difference है या non significant difference है ना. हमारे पास क्या कहते हैं, फॉर दैट वी बेसिकली ऑब्वियसली अब हम ये नहीं करेंगे कि मैं हर सैंपल का जो कि कहते हैं इंडिविजुअल कैटेगरी है उनको आपस में कंपेयर करूंगी. व्हाट आई डू इज मैं दोनों सैंपल्स की जो मीन वैल्यू है, जो एवरेज वैल्यू है, द एवरेज बेसिकली रिप्रेजेंट्स योर टोटल डेटा. इट्स अ गुड रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर टोटल डेटा. जो आपकी एवरेज वैल्यू होती है वो बताती है कि आपका जो डेटा है उसकी क्या कहते हैं एवरेज क्या है. So what we do is, if I have to compare whether the two samples are significantly different or not, I would take the mean value or I would use the mean value to find out whether the difference between the two samples is significant or not. ठीक है. सो टी टेस्ट हम जब दो सैंपल्स को कंपेयर कर रहे होते हैं टू फाइंड आउट whether the two samples are significantly different, that's when we use it. नेक्स्ट हमारे पास ये कहते हैं इसके लिए जो क्राइटेरिया होता है, क्राइटेरिया ये होता है कि हमारे पास जो डेटा है वो कंटिन्यूस हो. इफ द डेटा इज कंटिन्यूस, इज द डेटा क्वालिटेटिव और इज इट क्वांटिटेटिव. Continuous data falls in what category? Qualitative category or quantitative category? So yes, our continuous data is quantitative in nature. The data has to be quantitative. फिर हमारे पास ये कहते हैं that data should be collected from populations that are normally distributed. So our other criteria is basically that our population from which we have taken the samples of both the groups of both the data sets वो हमारे पास एक normally distributed population से belong कर रहे हो. ठीक है. फिर हमारे पास क्या कहते हैं, जब हम क्राइटेरिया की बात करते हैं, जो दोनों सैंपल्स हैं उनके क्या कहते हैं, जो क्राइटेरिया जो हमारे पास उनका सैंपल साइज होना चाहिए, सैंपल साइज 1 एंड सैंपल साइज 2, द टू सैंपल साइज शुड बी विद इन 30 वैल्यूज, उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए. सो the t-test is used to test for the significance of difference between two samples, each with continuous data, including samples with fewer than 30 values. ठीक है. फिर हमारे पास हमें जब अगर टी टेस्ट रन करना है, टी टेस्ट के लिए अगर हम मीन को अपना स्टैंडर्ड पॉइंट बना रहे हैं, तो हमने स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ी थी इन आवर वेंसडेज क्लास. स्टैंडर्ड डेविएशन हमें क्या बताती है? स्टैंडर्ड डेविएशन इज अ वैल्यू व्हिच टेल्स अस how how the complete data is spread around the mean. Is it closely spread around the mean or is it widely spread apart from the mean? So अगर मुझे क्या कहते हैं चेक करना है कि दो सैंपल्स में कितना डिफरेंस है और मैं उनकी मीन को अपना रेफरेंस पॉइंट बना रही हूँ सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंस चेक करने के लिए, सो आई ऑल्सो हैव टू सी कि उन मीन्स की स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है. सो स्टैंडर्ड डेविएशन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट इन द टी टेस्ट. अब जब हम फॉर्मूला देखेंगे तो हमें फॉर्मूला में तीन वेरिएबल्स नजर आएंगे मेजरली.
हम क्या कहते हैं, दोनों डेटास का हमें मीन पता होना चाहिए. सो वी नीड टू हैव द मीन ऑफ data set 1 and we need to have the mean of data set 2. So हम x mean of data set 1 minus mean of data set 2 करते हैं. अच्छा, यहाँ पर जो आपको बार्स नजर आ रहे हैं, इन बार्स को हम बुलाते हैं मॉड्यूलस. ठीक है. मॉड्यूलस का सिंपली मतलब क्या होता है? मॉड्यूलस का मतलब ये होता है दैट हमारे पास क्या कहती हैं, लेट्स से ये मॉड्यूलस है x1 माइनस x2. अब हमारे पास x1 जो है, x1 की अगर वैल्यू लेस देन x2 है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये 7 है, और x2 जो, सॉरी, x-1 x-2 जो हमारे पास मीन्स की वैल्यू है, मीन 1 इज 7, मीन 2 इज 10. 7 माइनस 10, मेरा आंसर जो आएगा दैट वुड बी -3. हमारे पास मॉड्यूलस से जब मैं अपनी वैल्यू को बाहर निकालती हूँ, my value outside of the modulus would always be positive. मॉड्यूलस का मतलब ये है कि अगर हमारे पास वैल्यू नेगेटिव आ रही है, जब हम मॉड्यूलस का साइन रिमूव करेंगे तो हम उस नेगेटिव को पॉजिटिव लिखेंगे. सो मॉड्यूलस बेसिकली सेज कि इसके अंदर विद इन द मॉड्यूलस जो भी ऑपरेशन अप्लाई हो रहा है, जो भी कैलकुलेशन हो रही है, the answer would always come in positive. मॉड्यूलस के बाहर जब आप वैल्यू लिखोगे द वैल्यू वुड ऑलवेज बी पॉजिटिव. क्लियर है? एनीबडी हु इज फ्रॉम मैथ बैकग्राउंड, ए लेवल मैथ अगर की हुई है जो कि वेरीफाई कर सके. मॉड्यूलस बेसिकली आपके विद इन द मॉड्यूलस जो भी वैल्यू है वो जब बाहर आएगी तो वो पॉजिटिव ही होनी चाहिए. यस सर कृष्ण, दैट्स व्हाट यू डिस्कस्ड. ओके. सो हमारे पास न्यूमरेटर में हम सिंपली क्या करते हैं, हम दोनों मीन्स को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं. सब्ट्रैक्शन के बाद जो भी आंसर आएगा इट हैज टू बी रिटन एज ए पॉजिटिव वैल्यू, भले नेगेटिव वैल्यू आई थी. मॉड्यूलस का क्योंकि साइन है, मॉड्यूलस का साइन का मतलब ये है कि जो भी हमारे पास हमने ऑपरेशन अप्लाई किया है, द आंसर would be in positive once it's outside of the modulus. Within modulus अगर -3 है तो आप -3 लिखोगे, मॉड्यूलस का साइन रिमूव करके वो -3 + 3 में कन्वर्ट होता है. Then हमारे पास if we go and see what's happening in the denominator end में हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास basically we have the sample standard deviation के square. So हमारे पास standard deviation of the first data उसका square, हमारे पास क्या कहते हैं second data set का जो standard deviation है उसको भी हम square करेंगे. दोनों स्टैंडर्ड डेविएशंस को स्क्वायर करके उन्हें डिवाइड करना है उनके इंडिविजुअल सैंपल साइज से. सो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द फर्स्ट डेटा सेट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय द सैंपल साइज ऑफ द फर्स्ट डेटा, एंड add that with the square of standard deviation of second data set divided by the sample size of second data set. ठीक है. Obviously this formula is always given to you do not have to memorize it with the key. So आपके पास I have जो भी मैंने डॉक्यूमेंट शेयर किया उसमें जितने भी आपको यहाँ पे वो नजर आ रहे हैं फॉर्मूला, वो फॉर्मूला भी आते हैं with the keys as well. ठीक है. Now what you would not be provided is this. ये आपको याद करना है. You need to know this. How to find out the degree of freedom for t-test. सिंपल है. हमारे पास दोनों सैंपल्स के आप सैंपल साइजेस को ऐड कर दोगे. सो जो भी सैंपल साइज था डेटा सेट 1 का, जो भी सैंपल साइज था डेटा सेट 2 का, उन दोनों को ऐड करके 2 से सब्सट्रैक्ट कर दोगे. सो n1 + n2 - 2. ठीक है. नाउ हम इसको क्या कहते हैं, क्वेश्चंस के थ्रू सॉल्व करते हैं. दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम अ रीसेंट एग्जाम, समर 2025 का है. So the part which was relevant to t-test, I have extracted that. For E. coli exposed to the negative control after 7 hours, the mean of 9 fluorescence measurements was 140 AU. So हमारे पास सैम्पल साइज कितना है? सैम्पल साइज हमारे पास इधर है 9. हमारे पास जो मीन वैल्यू है, सॉरी, मीन वैल्यू इज 140. So हमारे पास x1 dash is 140 AU. And हमारे पास sample standard deviation is 8 AU. For E. coli exposed to
ECHAMP after 7 hours, the mean of 9 fluorescence measurement was 100 AU. So 9 fluorescence is what? Our sample size. Our mean of data set 2 is 100 AU arbitrary units. The sample standard deviation was 10 arbitrary units. Now, they've given us our formula और उन्होंने हमें की भी provide कर दिया and they've asked us to show the working and state the answer to 4 significant figures. So I'm giving you guys 2 to 3 minutes, do the calculation and tell me what answer you guys are getting. Yeah, for a t-test, each sample can have values which lie less than 30. So हमारे पास ये हो सकता है कि हमारे पास एक की let's say n1 is 20, the other has an n2 of 25. तो हमारे पास for each sample the value should be less than 30. Right, so the answer should be 9.370. इसको हम कैसे करेंगे? x1 plus x2 simply हम क्या करते हैं अगर t लिखें so 140 minus 100 मॉड्यूलस का साइन आएगा अंडर रूट हमारे पास जो स्टैंडर्ड डेविएशन है 8 स्क्वायर अपॉन 9 plus this is what that's your 10. So 10 square upon 9. So if you put these values, you should be getting 9.370. Those of you who did not get 9.370, can you guys see what mistake you were doing? Even what did you put in the calculator? Are you using a scientific calculator? Is my first question. Okay. So 140 minus 100. This would be 40 in your numerator. 8 square would be 64 upon 9 plus 100 upon 9. So you should be getting your answer 9.370. Put this value in your calculator again. No, you can solve it directly. आपने बस ये part show करना है. आपने खाली values plug in करनी है. Obviously खाली आप directly blank में तो answer नहीं लिख सकते 9.370. Just write इतना. ये step by step show करने की जरूरत नहीं है. Okay, you're getting 9.370. Perfect. So the answer would be 9.370. Everybody's on the same page? Okay, ठीक है. So let's do another question. यहाँ पर भी हमारे पास क्या कहते हैं critical value वाली चीज आती है. So इस question में वो critical value का नहीं पूछ रहे थे. For that, I have found another one. So this is also from a recent paper, Winter 2025, paper 5.1. So basically, yeah, this is the first part. So हमारे पास यहाँ पर क्या हो रहा है? The student recorded the number of days required for germination of 10 seeds treated with a Juglone solution with a concentration of 1 is 1 into 10 to the power 3 moles per decimeter cube. 10 seeds not treated with a Juglone solution. No, you have to show this part. This part is important. You need to show this. This has to be written. And then the answer has to be written. This is not necessary. You do not have to show the simpler parts. But आपने overall क्या कहते हैं जो values हैं वो show करनी है आपने blank नहीं छोड़ना वो आपको ऐसे मुफ्त में 3 marks नहीं देंगे. So you need to show this, the first part, not step by step working. Because it's literally written over here. Show your working. That's the working के marks हैं और answer को state करने के marks हैं.
Okay. So the student recorded the number of days required for germination of two sets. So हमारे पास ये हमारा set वन है, ये हमारे पास हमारा set टू है. The student used a t-test to analyze the results. The t-test is appropriate for the number of seeds that were used. So हाँ हमारे पास ये कहते हैं दोनों sample size का जो वो है टोटल है, जो हमारे पास सैम्पल साइज की बेसिकली क्वांटिटी है दैट इज विद इन 30. सो हमारे पास क्या कहती हैं अकॉर्डिंग टू द नंबर we can use the t-test. Suggest two other reasons why the t-test is an appropriate statistical test to use for this investigation. What are the other criteria to apply t-test? एक तो हमारे पास ये होना चाहिए कि दोनों सैंपल्स के जो वो हैं क्या कहते हैं सैंपल साइज है वो विद इन 30 होने चाहिए. What are the other criteria to use t-test? The data should be continuous. Very good. तो हमारे पास continuous data होना चाहिए. And what else? So हमारे पास क्या कहती हैं जो criterias हैं. Continuous data is one criteria. Normally distributed is the second criteria. Standard deviations are approximately the same of the two means. ये हमारे पास third criteria होता है. And the samples are within 30 values. So ये हमारे पास fourth criteria होता है. So ये four criteria में से क्या कहते हैं कोई भी criteria अगर match कर रहा है तो हम वो यूज कर सकते हैं टी टेस्ट. तो हमारे पास एक क्राइटेरिया उन्होंने बता दिया था दैट टी टेस्ट इज अप्रोप्रिएट फॉर द नंबर ऑफ सीड्स दैट वर यूज्ड. सो अनदर क्राइटेरिया दैट वी कैन राइट इज continuous data and sample samples were taken normally distributed population. आप स्टैंडर्ड डेविएशन वाला भी लिख सकते थे क्राइटेरिया. तो द स्टैंडर्ड डेविएशन of the two groups is approximately similar or it is closer. तो हम पिछले में भी हमें देख सकते हैं जब हमने टेस्ट किया था तब मैंने दिखाया नहीं था आई थिंक. इफ यू सी जो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशंस है the standard deviations are closer values. 8 arbitrary units and 10 arbitrary units are values very close. So t-test का एक क्राइटेरिया ये भी होता है कि आपके पास जो दो डेटा सेट्स हैं उनकी जो स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यूज हैं they're closer to each other. ऐसा नहीं कि एक 10 है तो दूसरी 250 हो. So the values of standard deviation should be closer. Anyways, now over here, the null hypothesis for this t-test was there is no difference between the time taken for seeds to germinate when treated with juglone and the time taken for seeds to germinate when not treated with juglone. The calculated value of t was 2.090. The student compared 2.090, the value that we got for t-test, with the values in table 1.1. So हमने probability table अब use करेंगे अपनी t-test की value को देखने के लिए whether or not we should accept the null hypothesis or reject the null hypothesis. यहाँ पर degrees of freedom वाली चीज आ जाएगी. So degrees of freedom हमें t-test की calculate करने आने चाहिए. So what was the formula for calculating degrees of freedom? Plus n2 minus 2. Right. So हमारे पास n1 और n2 की values क्या है? n1 was 10 and n2 was also 10. So 10 plus 10, 20. 20 minus 2, 18. So the row that we would be seeing for our critical value would be the 18th degree of freedom row. And probability level जो है वो हमेशा 0.05 पर check कर रहे होते हैं A2 biology में. So हमारे पास जो critical value आ रही है that is 2.101. टी वैल्यू हमारे पास क्या थी 2.090 थी. तो कैन यू टेल मी हमारे पास जो टी वैल्यू है वो राइट हैंड साइड पर लाई करेगी या लेफ्ट हैंड साइड पर लाई करेगी? Where would the 2.090 fall? Right hand side to the critical value or left hand side? Left hand side. So if it is falling on the left hand side, what about the null hypothesis? Would we accept the null hypothesis or would we reject the null hypothesis? We would accept the null hypothesis. Very good. So using table 1.1 and
Using table 1.1 and the calculated value of t of 2.09, state and explain what the student can conclude about the results. So we would say that the critical value at 18 degrees of freedom is 2.101, which is greater than the t value 2.090. This means, नहीं पहले हम लिखेंगे null hypothesis is accepted. Null hypothesis is accepted, which means, what does it mean? हमारे पास जो difference है, is that significant or the difference is not significant? What should I write? Significant difference है या not significant difference है? Not significant. Very good. Which means this difference is not significant. So 1 mark for this, 2nd mark for the acceptance value statement, 3rd mark for explanation. Clear? Any questions? Are we good? Okay, so that's it for today's class. Thank you so much for joining in. I shall be seeing you guys inshallah on Monday. Yeah. So Monday se inshallah we would be doing past papers. So before Eid, I will be 20 minutes कैसे 30 minutes की क्लास थी ना. I told you guys खाली मुझे टी टेस्ट पढ़ाने आधा घंटा लगेगा उसमें. Explanation नहीं समझ आई. Okay, what part of the explanation were you unable to understand? यहाँ पर हमारे पास chance event है ना जीनत. हमारे पास क्या कहते हैं, अगर significant difference hota, if the difference between the two samples would have been significant, then it wouldn't have been a chance event. क्योंकि अगर difference significant है यानी कि it's large enough, and if it is large enough, then the difference is not due to chance, it is not due to coincidence. That difference would be significant because of some real reason. यहाँ पर हमारे पास क्या कहते हैं, क्योंकि 5% प्रोबेबिलिटी से ग्रेटर की रेंज में फॉल कर रहा है, 10% to 5% प्रोबेबिलिटी की रेंज में फॉल कर रहा है. सो हमारे पास वी आर सेइंग कि इन दिस केस सिंस द पॉसिबिलिटी or the t-test value is greater than the value at 5% probability, तो हमारे पास ये chance event हो सकता है, and therefore the difference is non-significant. Make sense? अच्छा, आई बट द थिंग विद मी इज, मुझे पर्सनली लगता है कि अगर मैं ये क्या कहते हैं बता दूं ना कि गाइस के क्रिटिकल वैल्यू और जो हमारे पास टेस्ट की वैल्यू है उनका ग्रेटर स्मॉलर से आप नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करो तो अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाता है. तो इसीलिए आई ऑलवेज से कि आप अपने प्रोबेबिलिटी लेवल पे 5% को मार्क कर दो. अगर 5% के राइट हैंड साइड पे आपकी कैलकुलेट वैल्यू फॉल कर रही है, यू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस. अगर 5% के लेफ्ट हैंड साइड पे फॉल कर रही है, सो यू एक्सेप्ट द नल हाइपोथेसिस. दैट्स हाउ आई टीच इट. मुझे लगता है इससे एरर्स के चांसेस कम हो जाते हैं. ठीक है. एंड ऑब्वियसली इफ यू आर एक्सेप्टिंग द नल हाइपोथेसिस तो आपकी एक्सप्लेनेशन सेम ही होती है. एक्सेप्ट कर रहे हो सो देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस, अगर रिजेक्ट कर रहे हो सो देयर इज सिग्निफिकेंट डिफरेंस. या यही होता है कि हमारे पास जो प्रिंसिपल वैल्यू होती है ना, बिकॉज राइट हैंड साइड पे क्या होता है, राइट हैंड साइड पे आपकी वैल्यूज जो होती है ना प्रोबेबिलिटी टेबल की, देखो वो इंक्रीज हो रही होती है. सो अगर आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू इज ग्रेटर देन योर क्रिटिकल वैल्यू, सो आपके पास क्या कहते हैं, नहीं ना, हमारे पास अगर ग्रेटर वैल्यू होगी तो रिजेक्ट होगा, एक्सेप्ट थोड़ी होगा. यहाँ पर अगर वैल्यू ग्रेटर होती तो हम रिजेक्ट कर देते, वैल्यू लेसर है तब हमने एक्सेप्ट किया.
लाइक आई ओपन अ chi स्क्वायर टेस्ट का एग्जाम्पल इन फ्रंट ऑफ यू। हमने इनहेरिटेंस में जब किया था, लेट मी सी, मैं टेबल से बता देती हूँ कि सेम अप्लाई होता है कि नहीं। सो यू सी, हमारे पास जब वैल्यूज इंक्रीज हो रही होती हैं, यानी क्रिटिकल वैल्यू से बड़ी वैल्यू आती है, तो हमारे पास वो राइट हैंड साइड पर फॉल कर रहा है। अगर वो राइट हैंड साइड पर फॉल कर रहा है, द प्रोबेबिलिटी इज लेस देन 5%, सो वी वुड रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। ग्रेटर वैल्यू है तो रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। ठीक है, मेक सेंस आरिफा? सो मुझे पर्सनली यही लगता है कि ग्रेटर एंड स्मॉलर से अगर आप याद करोगे, सो देयर इज मोर चांस कि आप ऑपोजिट लिख दो या कॉन्ट्रडिक्ट कर जाओ या भूल जाओ। ये होने की पॉसिबिलिटी है। मैं बहुत स्ट्रगल करती थी। एक सेकेंड, लेट मी ओपन बोथ द क्वेश्चन साइड बाय साइड। मैं इसको कॉपी कर लेती हूँ ताकि मैं समझ सकूं कि कंफ्यूजन क्या आ रही है। यस, आई वॉज अ फोर सब्जेक्ट स्टूडेंट। हाँ, यहाँ पर मुझे बताओ, हमारे पास जो टी वैल्यू थी, टी वैल्यू और क्रिटिकल वैल्यू, मेरी क्रिटिकल वैल्यू इज माई सीवी इज 2.101, माई टी वैल्यू इज 2.09। मेरी टी वैल्यू जो है, जो प्रिंसिपल वैल्यू आप कह रहे हो, वो मेरी क्रिटिकल वैल्यू से छोटी है या बड़ी है? सी, दैट्स व्हाई। तो हमारे पास क्या कहते हैं, आई पर्सनली थिंक, जब मैं भी स्टूडेंट थी, क्योंकि मैंने स्टेटिस्टिकल सिग्निफिकेंस को 5% से नहीं पढ़ा था, बिकॉज आई ऑलवेज से, जब मैं ये सब बता रही होती हूँ ना कि किस तरह से हम एक्सेप्ट और रिजेक्ट करते हैं, आई वॉज टॉट दिस वे। आई लर्नड दिस वाइल्स्ट आई डिसाइडेड टू टीच P5, क्योंकि मुझे बहुत कंफ्यूजिंग लगता था याद करना कि प्रिंसिपल वैल्यू क्रिटिकल वैल्यू का क्या रिलेशनशिप होता है फॉर एक्सेप्टेंस एंड रिजेक्शन। आई यूज टू गेट इट रॉन्ग एज वेल। दैट्स व्हाई आई हेटेड दिस पार्ट। लेकिन एवर सिंस आई स्टार्टेड टीचिंग, मैं प्रोबेबिलिटी वैल्यू को हाईलाइट कर देती हूँ। अगर प्रोबेबिलिटी वैल्यू के राइट हैंड साइड में मेरी प्रिंसिपल वैल्यू फॉल करेगी, वी वुड रिजेक्ट इट, बिकॉज लेस देन 5% की रेंज में वो फॉल कर रही है। अगर वो मेरे क्रिटिकल वैल्यू से लेफ्ट हैंड साइड पे फॉल करेगी, सो वो ग्रेटर देन 5% में फॉल कर रही है, आई एक्सेप्ट इट। ऑब्वियसली आपने अपनी क्या कहते हैं आंसर में ये रिलेशनशिप जरूर बताना है कि क्रिटिकल वैल्यू और टी वैल्यू में ग्रेटर कौन सी है, लेसर कौन सी है। यू नीड टू टेल दिस, सो फॉर दैट मैं रट्टे से ये कभी नहीं बता पाती थी, आई वुड गेट दैट रॉन्ग। सो इसीलिए आई फिगर्ड आउट दिस एक्सप्लेनेशन। ऑब्वियसली अगर मैं एक्सेप्ट और रिजेक्ट कर पा रही हूँ, मैंने सीवी और टी वैल्यूज मेरे आमने सामने लिखी हुई हैं, सो मैं ऑब्वियसली देख कर बता सकती हूँ कौन सी छोटी है कौन सी बड़ी है। बट जब मैं एक्सेप्टेंस एंड रिजेक्शन देखती हूँ ना, तो मैं एक्सेप्टेंस एंड रिजेक्शन इस बेसिस पे देखती हूँ कि जो मेरी कैलकुलेटेड वैल्यू है, वो मेरी राइट हैंड साइड पे पड़ेगी या लेफ्ट हैंड साइड पे पड़ेगी। दैट मेक्स माई लाइफ इजियर। whatever works for you, अगर याद करके आपने करना है, आप याद करके कर लो। That didn't work for me as a student. So that's why I've come up with this जुगाड़। बायोस्टैट्स के फोल्डर में आई एम अपलोडिंग दिस। या, बायोस्टैट्स के फोल्डर में ये सारी जाएंगी। ये जीनत। For those of you who do not have questions, you guys can leave Masania. या, नल हाइपोथेसिस फॉर chi स्क्वायर एंड टी टेस्ट आर डिफरेंट। टी टेस्ट में हम क्या कहते हैं, दो मीन्स के दरमियान जो डिफरेंस है उसको कैलकुलेट कर रहे हैं, दैट वेदर और नॉट द डिफरेंस बिटवीन द टू मीन्स इज सिग्निफिकेंट। chi स्क्वायर वैल्यू में हम कंपैरिजन कर रहे होते हैं ऑब्जर्व्ड एंड एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स का। द नल हाइपोथेसिस फॉर chi स्क्वायर टेस्ट इज दैट देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द ऑब्जर्व्ड एंड एक्सपेक्टेड वैल्यूज। ठीक है, डिड यू गेट द आंसर, जीनत? That null hypothesis for chi-square is difference between observed and expected values. Null hypothesis for t-test is the difference between the two means of two samples. No, 95% confidence interval I haven't taught as of yet. वो मैं क्या कहते हैं ग्राफ के थ्रू एक्सप्लेन करूंगी जब वो पेपर में आएगा। That's when I teach 95% confidence interval.
Yeah, the 5% is essentially telling you that this is a 95% confidence interval, but उसके respect से हमें पता होना नहीं चाहिए. Because when we're explaining, we're not talking about with respect to 95% confidence interval. हमें 95% confidence interval calculate करना आना चाहिए. उसका क्या कहते हैं, um, बार ग्राफ पे हमें उसकी error bars बनाने आनी चाहिए. So when you're writing this with respect to the theory, you do not need to know that 0.05 basically confirms that it is falling in the 95% confidence interval. Because that would just make things very confusing. So let's keep it basic. हमने मेजर नहीं किया ना डिफरेंस, हमने क्या कहती हैं एक टी वैल्यू निकाली और उस टी वैल्यू को हमने कंपेयर किया अपनी क्रिटिकल वैल्यू पे. अगर हमारे पास क्रिटिकल वैल्यू जो आ रही है उस क्रिटिकल वैल्यू की परसेंटेज जो है 0.05 जो है, जो हमारा 5% है, अगर 5% से ग्रेटर है तो हमारे पास क्या कहती हैं नॉन सिग्निफिकेंट है डिफरेंस. अगर 5% के बाद है तो हमारे पास द डिफरेंस इज सिग्निफिकेंट. सो हमने मेजर नहीं किया है, हमने कंक्लूड किया है लुकिंग एट द प्रोबेबिलिटी टेबल एंड कंपेयरिंग आवर वैल्यूज ऑफ द टी टेस्ट एंड द क्रिटिकल वैल्यू एट 5%.